Good afternoon, students. So, let us go for the revision of the next lesson, that is here after wastewater story, because we are going from the town. Okay. So the next lesson, that is lesson number 14. Sorry, 17. The forest, our lifeline. Okay. So remember that, everyone. So tomorrow will be the revision for this lesson. Revision on lesson number, that is 17. Forest, our lifeline. Okay, understood now? So this we are going to take it tomorrow. Everyone should remember that I will be sending you the Google form at 2 o'clock. Okay, and the revision will be taken. Now today, this lesson, that is forest our lifeline, here we will just have a recap on this lesson. If you have any doubt, students, those students, if you have any doubt, you can ask. Forest lesson ka Vani have no doubt. Everyone, you are having your textbooks with you, no? You are having textbooks with you. Just go through the textbook once, everyone. You also take your textbook. Where is your textbook? So go through the textbook and then just see if you have any doubt regarding any of the topic. So go through the topic one by one. No one have doubt? Okay, I know that you are having your textbooks. You just see the topics once again through the eyes. Any doubt regarding any of your topic or any subtopic. So the layers of forest may mainly two, yes, the layers of forest. In layers of forest, two layers are there. Okay. So two layers are there. That is, one is the understory, overstory and understory. दो है उसमें, एक ओवर स्टोरी और अंडर स्टोरी है दोनों. So here now the overstory, that is the emergent layer, और उसके वाला जो नीचे वाला लेयर होता है, that is the understory, that is regarding the trees. Okay, so here the tallest trees form the overstory. For example, if we are going to just see the forest, suppose these are the forests, okay, like this. So, if these are the forests, then, for example, this one, the overlayer, that means this layer, the upper layer, also will resemble the tallest plant. समझ में आ रहा है? So the tallest plant, सबसे जो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हम मोस्टली अपर लेयर पकड़ेंगे, नीचे का लेयर तो पकड़ेंगे नहीं. तो जब हम पकड़ेंगे तो ऊपर का जो लेयर आता है, that will resemble the tallest plant.
So the tallest plants जो एक group बना लेते हैं, the outer covering also we can say, that is called as the overstory. Overstory यानी ऊपर का. Okay, so here the tallest trees form the overstory, that is also called as the emergent layer. So this one, that is the emergent layer. Okay, then this layer is very sunny. Many birds, butterflies, and small creatures also live in this layer, because you know that it is the uppermost layer also. As I told you, the tallest trees. Tallest trees इसके अंडर में आते हैं. So here it is very shiny, or more part of the sun rays are received in this part, है ना. ज्यादा से ज्यादा sun rays पहुंचते हैं यहाँ तक. ज्यादा सन रेज पहुंचते हैं तो ज्यादा बर्ड्स या एनिमल्स भी रहते हैं, क्योंकि एनिमल्स को भी सनलाइट जरूरी होता है. तो बहुत सारे बर्ड्स ये लेयर में देखने को मिलते हैं. मेनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, okay, birds mainly, they live in this layer. Okay, then नेक्स्ट जो है हमारा अंडर स्टोरी. सो द ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रंक्स एंड द ब्रांचेस. अभी ये ओवर स्टोरी हो गया, अभी ये अंडर स्टोरी यानी नीचे वाला जो पोर्शन है ट्री का. नाउ ट्री इज डिवाइडेड इनटू द क्राउन एंड द कैनोपी. सो कैनोपी यानी कि अगर हम ये पार्ट लेते हैं ट्री का, so the branches of the tree makes the crown. तो ये जो branches वाला पार्ट है ये है crown. Okay, and canopy, the crowns of several trees in the forest. और ऐसे अगर बहुत सारे trees हैं तो ये जो पार्ट है ऊपर का, this makes the canopy. Means also we can say that एक प्लांट का अगर हम ग्रीन पार्ट देखेंगे या ब्रांच वाला पार्ट देखेंगे तो उसे कैनोपी क्राउन कहेंगे. और ज्यादा अगर हम पार्ट्स देखेंगे, ज्यादा ग्रीन पार्ट देखेंगे तो हम क्राउन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कैनोपी. अभी समझ में आ गया है? सो दिस इज रिगार्डिंग द सिंगल ट्री और ये है रिगार्डिंग द फॉरेस्ट. ओके, देन क्राउन्स ऑफ द ट्रीज आर वेरियस शेप्स. ये सबको पता है. कॉनिफेरस होते हैं तो ब्रॉड लीव्स वाले ब्रांचेस होते हैं. सो इट इज हैविंग मेनी शेप्स. फिर हमारा नेक्स्ट है अंडर स्टोरी. अंडर स्टोरी मीन्स नीचे वाला पार्ट. So the lower layer of the forest, that is the understory, and it is composed of herbs and shrubs. तो ये नीचे वाला जो होता है ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे bushes होते हैं, तो ये पार्ट, this is understory. This is understory. Okay, story is story. ये ऊपर का जो पार्ट है दैट इज ओवर स्टोरी एंड दिस इज द अंडर स्टोरी. जो पेड़ों के नीचे हर्ब्स, ग्रासेस, श्रब्स छोटे छोटे होते हैं, दे कम अंडर दिस लेयर. ओके, नाउ हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट इज द डिप्लीशन ऑफ वाटर. डिप्लीशन ऑफ वाटर में depletion of water table. Okay, that is in the next, that is it is in the water, I think, na depletion of Vani.
It is in the next, that is water a precious resource में आता है. ओके, सो स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट, नेक्स्ट लेसन में है, फिर भी मैं ये एक बार आपको बता देती हूँ. डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, हाउ डज द डिप्लीशन ऑकर्स. तो इसमें मेनली जो रीजंस दिए हैं, बिकॉज डिप्लीशन ये क्यों हुआ है. पहले तो नहीं था डिप्लीशन, बट नाउअडेज डिप्लीशन और रिड्यूस द रिडक्शन वी कैन से इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. तो ये है डिप्लीशन और इसके रीजंस भी हैं. फर्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. हमारा वाटर टेबल यानी फर्स्ट लेवल जब हम डिग करते हैं तब हमें जो पानी लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर टेबल. अंडरस्टूड? और दैट लेवल, दैट सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज द वाटर टेबल. तो ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द रीजन. सेकेंड, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, because so many industrial activities they need water. बिना वाटर के कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती है. चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे आयरन या कोई भी कंपनी बिना पानी के नहीं कर सकती है. सो वाटर, these company, this industry also needs a lot of water. तो पहला हमारा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इंडिया का पॉपुलेशन ही इतना इंक्रीज हो रहा है कि वाटर, फॉरेस्ट या जितने भी हमारी जो मेन नीड्स है वो कम पड़ती रहेगी. और जब तक पॉपुलेशन इंक्रीज होते रहेगा वो कंटिन्यूअसली डिप्लीट होते रहेगा. देन थर्ड है हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. यू नो दैट एग्रीकल्चर के लिए जो हम डिपेंड रहते हैं, मानसून या हमारा रेन वाटर, दैट इज नॉट इनफ. क्योंकि ये 2 महीने का ही रहता है बारिश, 2 महीने आके बारिश चली जाती है. तो हमें पूरा का पूरा खरीफ रबी दोनों के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है. एंड वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर सोर्स ऑफ वाटर. So agriculture is also very much, it means it is fully dependent on water. Understood? Then deforestation के लिए भी पानी, means this is again we can say the reason. क्योंकि फॉरेस्ट अगर नहीं है तो रेन जो है या हमें रेनफॉल भी नहीं मिलेगा. So deforestation is also the big reason. Then next is uneven rainfall. तो uneven rainfall भी ये एक रीजन है for depletion of the water table. जो वाटर टेबल यानी ग्राउंड वाटर जो ये कम होते जा रहा है, लेवल जो डिक्रीज होते जा रहा है. तो ये है हमारे 5 main reasons for decreasing the water table. So understood Vani? Is it clear? तो ये 5 main हमारे अगर points में लिखना है then you can write in point, और अगर उसको elaborate करना है then you can elaborate कि कैसे increasing population is responsible for decreasing the वाटर टेबल, कैसे अनइवन रेनफॉल से भी पानी का लेवल कम हो सकता है, कैसे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पानी को कम कर सकता है, कैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी वाटर टेबल को कम करता है. एंड डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट ही नहीं है तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा. There will be no rainfall. Understood? Clear? So these are the reasons. So students, have you understood now?
These are responsible for the depletion in the water table. Water table means the level of water under the ground. The first surface of the water which we need, which is seen under the ground, and from this level the water is stored underground. This first level is called as the water table. Understood now? और दिन ब दिन ये वाटर टेबल जो है वो नीचे नीचे ही जा रहा है, हर जगह पे, हर जगह पे. So we should be very aware of it. We should be careful. We should conserve the water and everything. Have you understood, students, now? Is it clear? Then next. So here okay. So again, if you have any doubts, you can ask, because tomorrow we are going to do the revision for lesson forest. फॉरेस्ट का मैं गूगल फॉर्म भेज रही हूँ. ओके, सो वन बाय वन. ऑलरेडी आई हैव सेंड यू द गूगल फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट. लास्ट टाइम भी मैंने भेजा था. ओके, इज इट क्लियर? Yes, students, so do you have any doubts regarding this lesson, that is the forest lesson? This one was the previous lesson, water. लेकिन अभी forest lesson में से और किसी को कोई doubt है? Layers of forest we have seen. Importance of forest products. तो ये मेडिसिनल यूज, फिर उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हर्बल यूज में होते हैं. फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस. Forest helps to maintain the water cycle. Forest recharge the groundwater. Forest preserve the environment. Forest support the soil conservation, है ना, क्योंकि इरोजन होने से बचाता है सॉइल. फिर फॉरेस्ट एज अ सिस्टम, तो ये एक पढ़ना है आपको. उसमें फूड चेन भी आएगा और फूड वेब भी आएगा. ओके, सो Vani, you have to just read this, forest as a system. Forest as a system में फॉरेस्ट ही पूरा एक इकोसिस्टम है. कैसे? क्योंकि फॉरेस्ट में सब कुछ मिलता है. फॉरेस्ट के बाहर हमें जाना नहीं पड़ता है. फॉरेस्ट गिव्स अस ऑक्सीजन, फॉरेस्ट गिव्स अस वाटर, फॉरेस्ट गिव्स अस फूड, एवरीथिंग. तो फॉरेस्ट इज अ फुल सिस्टम. अंडरस्टूड? एंड ये जो है फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है दे आर ऑटोट्रॉप्स, और एनिमल्स जो उस पर डिपेंड है वो है कंज्यूमर्स. तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये इनका लिंक बन जाता है. दैट इज कॉल्ड एज द फूड चेन. और फूड चेन एक फूड चेन है. अगर यूनिडायरेक्शनल है तो एक फूड चेन है, और अगर एक दूसरे पे ये डिपेंड है तो फिर ये वेब बन जाता है पूरा. और कैसे? ये पूरे एनिमल्स and plants, they are dependent on each other, that is the food web. Understood? और ये food web पूरा फैला हुआ है, और इस फैले हुए पूरे लिंक को हम कहते हैं सिस्टम. फूड वेब हो गया, फूड चेन भी हो गया, एंड होल एज अ सच एज वी कैन से इट एज अ सिस्टम. तो ये है हमारा फॉरेस्ट, एक पूरा सिस्टम है जो पूरे लिविंग बींग्स को साथ में रखता है. लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, दे लिव टुगेदर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे सपोर्ट ईच अदर. ओके, सो दिस इज द सिस्टम. हैव यू अंडरस्टूड नाउ? इज इट क्लियर? नाउ सैक्रेड ग्रुव्स इन इंडिया, इसके बारे में आई विल टेल यू. सैक्रेड ग्रुव्स, तो ये एक जगह है सैक्रेड ग्रुव्स.
I will just read it for you. सिंपल सा एक छोटा सा नोट है इसमें. I will read for you. Okay, so we are having time now. India has a long tradition of judicious use and wise conservation of all resources that are useful to people. Forests have been the lifelines of forest-dwelling communities since ancient times. फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज यानी इसमें बहुत सारे ट्राइबल्स भी हैं, एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स भी है. ट्राइबल पीपल, they also are dependent on the forest. One method for conservation of these green resource was the creation of sacred groves, usually dedicated to a local deity. Usually ये एक जगह होती है sacred grove and it is dedicated to the local deity. Local deity यानी वहाँ पे जो भगवान होते हैं, उस जगह के जो भगवान होते हैं उसको dedicated होता है. Tradition means of biodiversity conservation. These groups can be considered the ancient equivalent of natural sanctuaries, where all forms of living creatures are given protection by our deity. So, just sacred grove यानी it is just today's sanctuary. जैसे हम बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, वैसे ही ये एक टाइप का सेंचुरी है जहां पर वाइल्ड लाइफ, not only wildlife, the human beings, the tribals, the animals, all are conserved, protected there. They are protected. No one is permitted to cut any tree or plant, kill the animals and birds, or harm any form of life in this area. There are about 1,000 square kilometers of undisturbed sacred groves scattered in patches all over the country. These vary in size from a few trees to dense forests covering vast traces of land. These groves are important today as they are banks of genetic and plant diversity that have to be preserved and sustained. So, ये जो है, these are, we can say a bank. जैसे ब्लड बैंक होता है, सीड बैंक होता है, वैसे ही ये बैंक है जहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स का यहाँ पर we can say collection हमें देखने को मिलता है. Just it is a forest. Understood now? Is it clear, students? So this is all about the forest. Is it clear? So ये sacred group जो है वो इंडिया में ही नहीं, बहुत अलग अलग कंट्रीज. This is our tradition, Indian traditions we can see here. So they are found in India also. तो ये नेशनल जो हम पार्क या नेशनल सेंचुरीज कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये पहले से ही बहुत पुराने जमाने से भी चलता आ रहा है कि एक फॉरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. So this is these are all nowadays we call them as a sanctuary, but ये पहले sacred groves कहते थे इसको, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया करते थे, प्रोटेक्शन मिलता था अलग से. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स नाउ? इज इट क्लियर? So tomorrow be ready for the Google form of lesson forest. Is it clear? Understood now? Everyone, have you understood? So tomorrow lesson forest, I am going to post the Google form. You have to submit it. Submit it tomorrow. Okay? Thank you, students.